गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो अब तक हम लोगों ने एडसॉर्प्शंस एब्सॉर्प्शंस के बेसिस पे देखा था कि बेसिक मैकेनिज्म्स क्या है, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने फ्लूइड का आइसोथर्म्स पे हम लोगों ने फोकस किया था। उसके बेसिस पे ग्राफिकल एक्सप्रेशंस देखे थे। आज हम लोग एडसॉर्प्शंस की एप्लीकेशंस का जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट ऑफ द adsorptions applications. So in today's topic, we will only discuss the part of applications of adsorptions. So let's begin with the applications. So the phenomenon of adsorptions is find a number of applications, and important ones are listed over here. So first of all, we have a first one, that is the productions of the high vacuum. Second one, that is the gas masking. Third one is the control of a humidity. Fourth one, that is the removal of a coloring matter from the solutions. So ये जो चार पॉइंट है उसके अंदर हमको क्या बोला गया है उसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला दिया गया है, प्रोडक्शंस ऑफ ए हाई वैक्यूम। तो remaining traces of air can be adsorbed by the charcoal from a vessels evacuated by the vacuum pump to give a very high vacuums. Also we have the next point, that is the gas masking. gas mask यानी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो फायर फाइटर्स यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल इज प्रेजेंट इन दैट. सो अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और अ मिक्सचर ऑफ एडसॉर्बेंट. तो यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब क्या है, तो चारकोल यानी पाउडर ऑफ कोल, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, उसको प्री हीट किया है, यानी उसके अंदर ओनली पोरोसिटी है, उसके अंदर एयर नहीं है, वैक्यूम जो एयर नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड चारकोल. या फिर ऐसा एडसॉर्बेंट कि जिसके पास पोरोसिटी ज़्यादा है, उसको हम लोग इसके ये डिवाइस में लेंगे. So which is usually used for the breathing in a coal mines to absorb the poisonous gas. So this is the use of this gas mask. Also to control the humidity. तो ये हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब नई कुछ चीज़ परचेस करके लाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या फिर हम लोग कोई वाटर जग लाते हैं, या फिर कोई बैग लाते हैं, तो उसके अंदर वाइट कलर का जो बैग रहता है उसको हम लोग सिलिका जेल्स बोलते हैं. तो सिलिका जेल और एंड द एल्यूमिना जेल्स आर यूज्ड एज एब्सॉर्बेंट for the removing the moisture and controlling the humidity. Fourth one है हमारे पास removal of a coloring matter of a solution. So animal charcoal will remove the colors of a solutions by absorbing the color impurities. So ये वाला concepts हमको पता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि शुगर सॉल्यूशन जो येलो कलर का है, उसमें से येलो कलर को रिमूव करने के लिए हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं. सो नेक्स्ट जो हमारी पास एडसॉर्प्शंस की एप्लीकेशन है उसके अंदर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पार्ट ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, फिर इन क्योरिंग ऑफ डिसीज, then fruit in food protection process, as well as the adsorptions indicator, and last one we will use as a chromatographic analysis. So let's begin with the heterogeneous analysis. So here we have a word that is a heterogeneous. Heterogeneous यानी दो पार्ट जब अलग रहते हैं या फिर दो फेज अलग रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोजेनस कैटालिसिस. या फिर कैटालिसिस का मतलब हम लोग क्या समझ के आए हैं प्रीवियस जो हमारी स्टडीज है उसके बेसिस पे, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कैटालिसिस यानी वो जो पार्ट या सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस को एनहांस करता है उसको हम लोग बोलेंगे कैटालिस्ट, और जो फिनोमिना है उसको हम लोग बोलेंगे कैटालिसिस. सो एडसॉर्प्शन ऑफ ए रिएक्टेंट on the solid surface of the catalyst will increase the rate of reactions. रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिएक्शंस कितनी फॉरवर्ड हो रही है या बैकवर्ड हो रही है, यानी हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही. सो देयर आर मेनी gaseous reactions we observed in the industrial basis. First of all, that is the manufacturing of ammonia using the iron as a catalyst. ये वाला सेंटेंस में हम लोग हेबो प्रोसेस को याद करेंगे जो 10th में हम लोग पढ़ के आए हैं. फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 by the contact process, and use of a finely divided nickel in the hydrogenations of oils. These are the excellent examples of the heterogeneous catalysis. तो हेबर प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था, N2 और H2 की रिएक्शंस के लिए आयन एज ए कैटालिस्ट लिया था.
11th में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करने के लिए हम लोगों ने निकल एज ए पार्ट ऑफ कैटालिस्ट लिया था, लेकिन अब हम निकल या फिर आयन का हम लोग सॉलिड पार्ट लेंगे, लेकिन उसका फॉर्म कैसे लेंगे, तो वो ब्लॉक नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, उसका पाउडर करेंगे। पाउडर करने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी जो एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म है वो बढ़ जाएगी, यानी वो अच्छे से कैटालिस्ट के हिसाब से वो काम करेगा। फिर आएगा सेपरेशन ऑफ ए इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस यानी ऐसे गैस जो केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय द चारकोल, मिक्सचर्स ऑफ नोबल गैसेस कैन बी सेपरेटेड। सो यहाँ पे मैकेनिज्म्स या प्रिंसिपल हमने क्या लिया, डिग्री ऑफ एब्सॉर्प्शन का जो डिफरेंस है उसको हम लोगों ने बेस लिया। सो ऑन ए यहाँ पे हम लोग चारकोल कौन सा यूज करेंगे, कोकोनट चारकोल एट ए डिफरेंट टेम्परेचर यूज करेंगे। क्योरिंग ऑफ डिसीज में, यानी कोई वाउंड हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, हम लोगों को कट लगा है, तो हम उसके ऊपर जो ट्यूब वगैरह लगाते हैं या फिर क्रीम लगाते हैं, तो उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म से याद करेंगे। सो नंबर ऑफ ए ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द जर्म्स by getting the adsorbed on them. Next one we have, that is the flotations technique. So a low graded sulfide ore is concentrated by separating it from the silica and the other earthy materials. So यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट करना है कि फ्लोटेशन टेक्निक हम लोग 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोगों को बताया जाएगा ऐसी ओर कि जिसके अंदर सल्फाइड ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ सल्फाइड के अलावा, सल्फर के अलावा, या फिर जो रिक्वायर्ड या टारगेटिंग मटेरियल है उसके अलावा हमारे पास सिलिका है या फिर अर्थी मटेरियल है, उसको हम लोग गैंग बोलेंगे। उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लोटेशन टेक्निक को यूज करेंगे। उसके अंदर हम लोग सल्फाइड की जो मेटल है और है उसको वेट करने के लिए हम पाइन ऑयल का यूज करेंगे और फ्लोटिंग एजेंट हम लोग डालेंगे। तो वो उसका पूरा डिस्कशन हम लोग 6 सितंबर में करने वाले हैं। फिर आएगा हमारे पास एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। सो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर में हम लोग क्या करेंगे, तो surface of a certain precipitate such as the silver halides have the property of adsorbing the some dyes like eosine, fluorescein, etc., and thereby they will produce the characteristics color at the end point. So यहाँ पे कलर चेंज के हिसाब से हम लोग देखेंगे। फिर आएगा हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। So chromatographic analysis based on the phenomenon of adsorption finds the number of application in the analytical as well as the industrial fields. तो ये जो पूरी एप्लीकेशंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की, उसका हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे। उसके अंदर हम लोग वीडियो के जरिए देखेंगे कि हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। सो तो यहाँ पे हम लोग अभी इसका डिस्कशन करने वाले हैं। Absorption plays an important role in all phenomena and processes where surface properties are essential. The phenomenon of absorption finds very extensive applications in industry, research laboratories, and in everyday life. Some important applications of absorption are production of high vacuum, gas masks, humidity control, clarification of sugar, chromatographic analysis, heterogeneous catalysis, absorption indicators, separation of inert gases, from flotation processes, and curing diseases. Let us discuss these applications one by one. We will first discuss production of high vacuum. A vessel that has already been evacuated by a vacuum pump may still contain traces of air. If a bulb of activated charcoal is connected to this vessel, the remaining traces of air get absorbed by the activated charcoal. This results in the production of a very high vacuum.
gas masks used by miners in mines provide protection from both particulate matter and poisonous gases. These are based on the phenomenon of adsorption. Gas masks contain activated charcoal or a mixture of adsorbents that preferentially absorb large volumes of poisonous gases and thereby purify the air for breathing. Another application of adsorption is to control humidity in the air. Silica and aluminum gel are used to keep the relative humidity as low as possible. They absorb moisture from the air, thereby preventing damage to electronic devices and musical instruments. Silica gel is also used as a means of preservation to control relative humidity in museums and libraries and exhibitions. An application of adsorption from solutions is the clarification of sugar. Animal charcoal is used to decolorize sugar solution since it absorbs the coloring materials and carries them with it when separated from the solution, leaving behind a clear solution. The phenomenon of absorption has provided chemists an excellent technique of separating various components of a mixture. This technique, known as chromatographic analysis, is used widely in analytical and industrial fields. Chromatographic analysis is based on the selective adsorption of certain substances from a solution by a particular solid adsorbent. Let us now discuss heterogeneous catalysis. Adsorption plays a very important part in the catalysis of gaseous reactions by solid surfaces. Let us see how heterogeneous catalysis works. According to the adsorption theory, gaseous reactants are absorbed on the surface of a solid catalyst. This increases the concentration of the reactant on the surface of the solid catalyst, thereby increasing the rate of reaction. The theory also explains the greater efficiency of the catalyst in a finely divided state. A majority of heterogeneous catalysts are solids. For example, iron is used as a catalyst in the manufacture of ammonia. The use of vanadium pentoxide in the manufacture of sulfuric acid by the contact process and of finely divided nickel in the hydrogenation of all ester fats are other excellent examples of heterogeneous catalysis. An important application of adsorption in the laboratory is an adsorption indicator. An adsorption indicator is a substance that is adsorbed along with the change in the color at or near the equivalence point of a titration. Spines use in precipitation titrations. For example, potassium bromide is easily titrated with silver nitrate using eosin as an indicator. Fluorescein is another dye that is used as an adsorption indicator. The phenomenon of adsorption is also used to separate inert gases. A mixture of inert gases like neon, helium, and argon gets
separated because of the varying degrees of absorption of the individual gases on coconut charcoal at different temperatures. The amount of absorption of noble gases increases with an increase in the atomic mass and a decrease in the temperature. The front flotation process of concentration of sulfide ores in metallurgy is also an absorption phenomenon. The ore particles are absorbed to the surface of the front, while the gangue settles at the bottom of the tank. Adsorption plays a very important role in biological systems. One very important application of adsorption is in curing diseases. A number of drugs get absorbed on the surface of germs in the human body. The germs are killed by the action of the drug, and the disease is eliminated. सो અહીં સુધીનું આપણે આજે यहाँ तक का हम लोगों ने चेक किया कि एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, यहाँ तक का आप पढ़िए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैटालिसिस वाला कॉन्सेप्ट ले लेंगे।